for finding the shortest path, like the Dijkstra algorithm, but there was some limitation in the Dijkstra algorithm that cannot find the shortest path in a graph if the edge weight is negative. But in the case of Bellman-Ford algorithm, we will apply the same policy here as we have applied in the Dijkstra algorithm, but that policy will be repeated a number of times. Okay, so if it may be possible, like there is a negative age, and due to that particular negative age, there will be a negative age weight cycle. So if there is a negative age weight cycle, then we are unable to find out any shortest path also using this Bellman-Ford algorithm. So this Bellman-Ford algorithm is also utilized to find out, like if a particular graph is having negative weight edges. Okay, so let's see what is the basic procedure of this. So before that, just we will simply review these things like shortest path problem. What are these? So how can we find the shortest route between 2 points on a road map? Like model the problem as a graph problem where the vertices. और जरूरी नहीं कि हम इस तरह की problems को ही model करें. These algorithms are having algorithm in several places in the routing algorithm in the internet for routing the packet, and like if you are working in a chemistry lab, then the heat production and other things, we can simply denote the processes in terms of nodes there and what are the heat production and how the total heat is released over there. Means, and every field we can, if the problem can be depicted in the form of a graph, then we can simply utilize that these algorithms for finding the solution. Okay, but the goal will be there only to find out the shortest path in between. If we are given a source node, then to source node to the all the vertices of the graph. So this is the shortest path problem. Like we are given a directed graph G, V, comma E. That is, these are the set of vertices, set of edges, and we are having a weight function. Means basically the each edge will have a weight. So weight of a path will be minimum if we simply find out a path from source to that particular vertex. So that is our main goal in this type of algorithm. So shortest path weight from node U to V will be dial. We simply represent it dial U comma V equal minimum of weight of P. That is, it is weight of a use from U to V if there exists a path from U to V. Otherwise, it will be infinity. Like if we are talking about S to X directly. So if we are talking about a direct edge, then there is no direct edge from S to U. So initially, these all will be set to infinity like the Dijkstra algorithm. And it may be possible like a particular graph can have several shortest paths. Depends on the situation, like maybe possible like more than one edges having the same edge weight. So depending on the scenario, it may be possible like several shortest paths can be possible using this algorithm. But इसमें और उसमें बस ये difference है. The Dijkstra algorithm cannot work on the negative edge weights, but this algorithm will work on the negative edge weights, and also it will identify like a particular graph is having negative age weight cycle. Okay, so negative age weight, it can be like suppose a person is moving from a point to B, but during the movement, rather than the profit, there is a loss to this particular person in terms of money and there's something else. So that can be represented in the form of a negative value. So negative weightage may form negative weight cycles. It may be possible. अब negative weight cycle क्या है? Basically, ये चलो मैं अभी आके बताऊंगा आपको. So there is a term that is known as the relaxation. So what is the meaning of the relaxation? Relaxation is like when we are just processing a particular node. So for this particular node, we simply find out the shortest distance from this node to all the other nodes. So we simply modify the distance values of those particular nodes from the source node. So that is known as the relaxation. तो उसमें हम क्या करते हैं, जो जिस भी नोड को प्रोसेस कर रहे होते हैं उस नोड का डिस्टेंस वैल्यू प्लस एज वेट इन बिटवीन दैम, दैट और ये दोनों मिला के इनका समेशन एंड द ओरिजिनल डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड फ्रॉम द सोर्स, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा दैट विल बी असाइंड हियर. So that is known as the relaxation basically. ठीक है.
So if uh, so this relaxation, अब जैसे in the case of Dijkstra algorithm, we simply perform the relaxation process only one time. But in the case of this Bellman-Ford algorithm, it will be repeated till mod of v minus one time. Means the total, suppose we are having four nodes in a particular graph, then it will be repeated 3 times. And if in the during the relaxation process the age weights are changing, it may be possible like there will be a cycle. So how I'm just why I'm just saying this, I will clear you in the next slide what is the meaning of this particular cycle and why so. So if such cycles are reachable from the source, then del s comma v is not properly defined. Means अगर ऐसे cycles हैं graph में, like then we are not able to find out the shortest path, because फिर वो एक loop में चला जाएगा, infinity loop में. Means we will simply keep going around the we can say this particular cycle again and again and again. Okay, and that will be infinity loop. So So let's suppose we are talking about this graph. So if we are talking about the path from S to A, so there is a direct edge from S to A. So the path or the weight del S to A will be 3. If we are talking about S to B, then S to B, we are having a single part that is from S to A and uh, A to B. So weight of S to A plus weight of S to B, that is minus 1, because it is 3, it is minus 4, that is minus 1 from S to B. If we are talking about H to C, then it is H to C is we are having a direct edge from here. Okay, H to C with the weight 5. Okay, it may be possible like in this case, this cycle is having positive 8, positive weight, like from here to here 6, and from again D to C, the cost is minus 3. So we are total doing the summation. Like if we are depicting the flow network using the graph, then the total flow from node C to D will be 6 minus 3, that will be 3. Now, so the Bellman-Ford algorithm will work for the negative weights, and negative weights are allowed, and negative cycles reachable from the source are not allowed, because if there is a cycle in the graph, then it will go to infinity loop and we are unable to find out the shortest path, because we stuck in that particular loop. So, but the Dijkstra algorithm will not work on the negative weights, okay, because we simply do the relaxation one time and it may be possible like we are unable to find out the shortest path. ये difference है, Dijkstra में relaxation एक बार होता है, हम एक node को process करते हैं. Just a second. Okay, so the operation जो दोनों में थे वो common है, like we are in the beginning we are just initializing the distances of for every vertex. जैसे जो source vertex है, जो भी source vertex given है तो उसकी distance value को हम initialize करते थे 0 से, और बाकी जो vertices थे for all rest of the vertices we initialize the distance value with the infinity, initially with the infinity value. So these both steps are common. But what is the difference? The relaxation process will execute only one time for all the vertices, but in the case of Bellman-Ford, the relaxation process will execute for mod of v minus one time. Means हर एक vertex को हम relax करेंगे every time, like suppose 4 vertices are there, then it will execute for 3 times. And we will check like during the relaxation or after the relaxation, is there any change in the basically is there any change in the distances of the vertices, कि relaxation हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. अगर continuously relaxation हो रहा है, suppose जो 4 vertices हैं उस ग्राफ में 3 टाइम हमने relaxation करा, उसके बाद भी अगर changes हो रहा है, it may be possible like there is a negative weight cycle. Okay, so
फिर हम क्या करते हैं, वी सिंपली चेक वन मोर टाइम्स, लाइक अब भी हो रहा है क्या, अगर लास्ट टाइम में भी अगर चेंज होता है, इट मीन्स वी आर जस्ट रिलैक्सिंग अगेन एंड अगेन अ पर्टिकुलर साइकिल. So okay, so that's why this we simply check the Bellman-Ford algorithm and simply do the relaxation mod of v minus 1 number of time. Okay, so for each vertex, the shortest path we simply denoted by del s comma v, and d of v equals shortest path weight estimate. Initially d of v will be infinity, and जैसे जैसे algorithm proceed होगी तो ये del of v ये change होता चला जाएगा. We will have a pi of v, that is the predecessor of v on a shortest path s. So like जैसे जो shortest path जो भी मिला हमको, तो उसमें उस particular node का predecessor कौन सा है. Suppose this is the shortest path s to t and t to x. So in this case, for this particular s, there is no predecessor. For this particular t, the predecessor is s. For this x, predecessor t. Okay. So if no predecessor, then pi of v equal nil. Then like for the source node, no predecessor is there. So the predecessor for this s will be null value. Okay. So and the pi indices at tree and the shortest path tree. So we can simply print the pi and we can just print the shortest path from the source node to that particular vertex. So this is the initialization process. In this initialization process, what we will do, we simply initialize the distance value for each vertex, starting from the source node to all the vertices. So for all the vertices, the distance value will be initialized to infinity, and predecessor nodes for all the vertices will be initialized to nil. Okay, and for the source node, we simply initialize the distance value with 0, because we are just starting from that particular node. That will be the source node, and we will find out the shortest distance from that source node to other node. Now the relaxation step, so it is same like we have done in the case of the Dijkstra algorithm. So relaxing an edge means testing whether we can improve the shortest path to v found so far by going through u. Like we have suppose कोई भी scenario हमारे पास है, suppose it is the case like it is as source, it is a and it is b. तो एक बार इसका मीनिंग क्लियर हो जाए आपको, वैसे तो क्लियर होगा. तो इट इज सपोज 5, इट इज 1 एंड इट इज 2. तो जब हम एस को रिलैक्स कर रहे हैं, देन वी कैन सिंपली मॉडिफाई द डिस्टेंस वैल्यू. इसकी तो 0 होगी, इसकी डिस्टेंस इन्फिनिटी होगी, एंड डिस्टेंस ऑफ दिस नोड विल बी आल्सो इन्फिनिटी. we'll simply relax this means we'll modify the distance value of its neighbor node. तो neighbor node हुआ a, neighbor node हुआ b, तो इसका रिलैक्सेशन के बाद हो जाएगा 5, इसका रिलैक्सेशन के बाद हो जाएगा 1. तो जब ये हमने रिलैक्स किया, तो अभी जिसका डिस्टेंस सोर्स से है 5, इसका डिस्टेंस है 1. नाउ सपोज वी आर जस्ट रिलैक्सिंग दिस वन बिकॉज इट इज हैविंग द minimum distance value. So for b, if we simply relax it, then ये तो रिलैक्स हो चुका है, सो वी विल रिलैक्स द ए. इसका वेट है पहले से 5, और अब नया हो सकता है 1 + 2 दैट इज 3. तो मीन्स हमको पहले तो शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला था, अब हमको शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ से मिल गया. दैट्स व्हाई वी विल सिंपली मॉडिफाई इट. So this is the basically testing like whether we can get a new shortest path, okay, through other node. That is basically, so for this purpose we simply do the relaxation. तो हम क्या करेंगे, whenever we are just doing this relaxation step for relaxing an edge, then we'll check here for the distance of b, that is जो उसकी पहले से है, it is greater than the distance of u, means for that particular vertex, प्लस एज वेट जो दोनों वर्टेक्स के बीच में है. तो अगर ये ज्यादा है, इट मीन्स देयर इज वी आर हैविंग अ न्यू शॉर्टेस्ट पाथ, और अगर ये नहीं है, इट मीन्स देयर इज नो नीड फॉर द रिलैक्सेशन. So if this is the condition, like we can improve the shortest path to be okay. And the अच्छा, पहले इसका पेरेंट कोई दूसरा होगा ना, सॉरी प्रेडिसेसर. नाउ द प्रेडिसेसर विल बी द यू फॉर दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स लाइक बी. ठीक है. So it is like this, as to u and v. So as to u, we are having shortest path 5, and for this one we are having, it is 9. So after the we can say relaxation step, if we want to reach to this particular v, then we can simply modify it like 5 + 2, that is 7. So as to v के लिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, rather than directly going from some other path to the u, that is costing around 9. Okay. अब इसके अंदर देखें तो h to u it is 5 and h to v it is 6.
and suppose it is relaxed. Now we simply relax this one. Okay, that is 5. So 5 to 6, it is 5 plus 2, और पहले से इसका 6 है, 5 plus 2 7, और इसका 6 है. So it means there is no need for the change or the relaxation. Okay. तो आफ्टर द रिलैक्सेशन के बाद क्या होगा, दोनों में से दिस आइदर दिस विल बी स्मॉलर और दिस विल बी स्मॉलर, दैट विल बी द डिस्टेंस वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर नोड. अगर वो ज़्यादा है तो मॉडिफाई करेंगे, अगर वो पहले से ही कम है तो उसको नहीं करेंगे, मॉडिफाई नहीं करेंगे. So the Bellman-Ford was like a single source shortest path problem. It will simply compute dial of s comma v and the predecessor for every vertex. It allows negative edge weights and can detect negative cycle. So अगर negative cycle है then it will return true. If it will return true, it means there is a shortest path available, means if no negative weight cycle are reachable from the source s, and it will return false, means no solution exists, because there is a, it may be possible there is a shortest path there is a नेगेटिव एज वेट साइकिल. तो अगर हम सोर्स से स्टार्ट करें तो हम डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पा रहे, और नेगेटिव एज वेट साइकिल में इन्फिनिटी टाइम स्टक हो गए. तो द क्वेश्चन है जो मैंने बता दिया आपको, व्हाई वी आर एग्जीक्यूटिंग एंड व्हाई वी आर डूइंग द रिलैक्सेशन स्टेप फॉर मॉड ऑफ v minus 1 टाइम. So the Bellman-Ford just relaxes each edge mod of v minus time and then check whether the path can still be reduced. हर बार ये चेक होगा और देखेंगे कि अब भी रिलैक्सेशन पॉसिबल है क्या. बट mod of v minus 1 टाइम क्यों? बिकॉज the largest acyclic subgraph in a graph with v vertices can only have less than equal mod of v minus 1 edges, just like a tree can have at most n minus 1 edges. So in the first mod of v minus iterations, all chains up to the longest acyclic chain in a graph are relaxed, and after that, if there is a possibility for relaxation, then relaxing further would mean that a cycle is being relaxed. मीन्स अगर हमने mod of v minus 1 टाइम भी रिलैक्स कर दिया और उसके बाद भी रिलैक्सेशन हो रहा है, इट मीन्स देयर इज अ साइकिल. ओके, मीन दैट इज नॉट द साइकिल. So if any relaxation is possible, that means a negative net gain is possible on a cycle. So hence the Bellman-Ford can detect that and signal whether we can find a shortest path on a such graph. Okay. So let's understand this by one example so that it will be easy to you. Just a second. Let me see. We are having this example here. Yes. So each edge is relaxed mod of v minus 1 time by making mod of v minus 1 passes over the whole edge set. Since no shortest path can have more than mod of v g minus 1 edges, so after that many passes, all d values are correct. We will check this number of times. So to make sure that each edge is relaxed exactly mod of v minus 1 time, put the edge in an unordered list and goes over the mod of v minus 1 time. So this is the edge list for this particular graph. अब हम क्या करेंगे, इसको mod of v minus 1 time relax करेंगे. So you can see here we are having total 5 vertices, means we will do the relaxation 4 times. तो वैसे तो ये 4 times ही होता है, but it may be possible like that is mod of v minus 1, that is the maximum value. It may be possible like after the first relaxation changes हो ही नहीं रहे उसके अंदर, तो means will stop the process, means अब इसमें change possible नहीं है. Okay. And if let's suppose the changes are continuously going, it may be like the combination of the age weights, something like that. So it may be possible like the relaxation stops after the mod of v minus 1 time. Sorry, the changes after the relaxation stops after the mod of v minus time. तो चेक जब तक करना है हमको कि जब हम रिलैक्सेशन कर रहे हैं और पूरे ग्राफ में एक भी जगह चेंज नहीं हुआ, तो till that position will stop the relaxation process. Okay. So suppose ये ग्राफ है हमारे पास, and here these are the edges, and let's suppose I've simply just draw a table here, so जिससे clear हो जाए हमको कि
तो यहाँ तो आ जाएंगे वर्टिसेस, तो मैं वर्टिसेस लिखता हूँ यहाँ पे ताकि हमको पता रहे कि इनकी डिस्टेंस वैल्यू चेंज हो रही है क्या। इट इज एस टी वाई एक्स एंड जेड, ठीक है। और यहाँ पर डिस्टेंस वैल्यू आ जाएगी आफ्टर द टोटल नंबर ऑफ इटरेशन। इसमें 5 वर्टिसेज हैं, सो विल डू इट 4 टाइम्स एंड वी विल चेक लाइक चेंजेस हो रहे हैं क्या। जैसे ही चेंजेस स्टॉप हो जाएंगे, विल स्टॉप दैट। हाँ, हो रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अब इसको हम हर एक एज को कैसे करेंगे, सो इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। सो जस्ट पिक एनी पर्टिकुलर वर्टेक्स। सपोज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एस, ऐसे स्टार्ट करेंगे और हर एक वर्टेक्स उस पर्टिकुलर वर्टेक्स से जो भी एजेस हैं उन सब आउटगोइंग एजेस उनके उस अकॉर्डिंग उसको रिलैक्स करेंगे। तो क्योंकि हम सब सारे वर्टेक्स को रिलैक्स करेंगे तो ऑब्वियसली बात है सारी एजेस भी रिलैक्स हो जाएंगी, बट ये प्रोसेस 4 टाइम रिपीट करना है, या बोले जब तक रिपीट करना है जब तक चेंजेस हो रहे हैं नहीं हो रही। अच्छा, क्वेश्चन इज सपोज 4 टाइम रिलैक्स करने के बाद फोर्थ इटरेशन में भी चेंज हुआ, देन वी विल जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट वन ऑल्सो। एक बार और चेक करेंगे और सपोज आफ्टर दैट इटरेशन द एज वेट सॉरी डिस्टेंस वैल्यूज आर चेंजिंग, means there is a negative weight cycle, so we'll simply stop and return their false, like there is no shortest path possible. Okay, so let's start from this as, so अब रिलैक्सेशन का मैंने बता दिया प्रोसेस, so I will do it little fast। एच टू टी ये हो गया, पहले से इन्फिनिटी है, ये हो गया 0+6, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पे। अच्छा, इसका तो हमारे पास इसका तो 0 ही रहेगा, ठीक है। एक मिनट, 0 नहीं रहेगा, ये भी मॉडिफाई होगा। फाइनली जब सारी एज वेट, इनका जो एज वेट होंगे उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो एच टू टी, तो एच टू टी में टी का हो जाएगा 0+6, और इसको चेंज करते जाना है हमको, ठीक है। या एक मिनट, 6 नहीं करेंगे, ये हो गया 6। तो हमारी ये वाली एज अच्छा ऐसे तो कंफ्यूजन होगा, चलो देखते हैं। 6 एच टू टी वी हैव रिलैक्स दिस वन। एच टू वाई इट विल बी 7, ये हो गया, ठीक है। देन कम टू हियर टी टू एक्स, इट विल बी 6+5 11, ठीक है। टी टू एक्स या एक्स, इट इज टी टू एक्स, इट इज एक्स टू टी, एक्स टू टी अलग है, ये रहा टी टू एक्स। ऐसी सीक्वेंस में कर ले ज़्यादा। स्टार्ट फ्रॉम हियर टी टू एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर ये इन्फिनिटी है, पहले एक बार इसको करना पड़ेगा हमको। इट विल बी 6, इट विल बी 7, ये दोनों हो गया। Now just take this one, T2x, it will be 11, T2y, it will be 6+8 14, ये 7 है, कोई चेंज नहीं होगा। T2z 6 minus 4, that will be 2। Okay, now let's take this one, x2t, x2t 11 minus 2, that will be 9, पर इसका पहले से 6 है, नहीं करेंगे चेंज। yx, y and yx, so it will be 7 minus 3, that will be 4, इसको मॉडिफाई कर देंगे, it will be 4। yz this one, so 9 plus 2 11, ये 2 है, इसको चेंज नहीं करेंगे। zx that will be 2 plus 7 9, पर ये पहले से 4 है, no change। zs, what is z is s, so it is ये पहले से 0 है, और ये हो गया 2 + 2, इट विल बी 4, तो इसको चेंज नहीं करेंगे हम यहाँ पे, तो 0 रहेगा। और ये सारा हो गया। तो आफ्टर दिस फर्स्ट इटरेशन जस्ट चेक व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द डिस्टेंस वैल्यू। तो फॉर एस इट इज 0, फॉर टी इट इज 6, फॉर वाई इट इज 7, फॉर एक्स इट इज 4, एंड फॉर जेड इट इज 6, ठीक है। एंड नाउ वी सिंपली रिपीट दिस प्रोसेस वन मोर टाइम, नेक्स्ट टाइम, फिर देखते हैं कि ये वैल्यू यहाँ चेंज होती हैं क्या, या ये यही रहती है, ठीक है। तो अगेन
do the same operation, again do the relaxation. So for h to t it will be 0 plus 6, no changes. H to y 0 plus 7, no changes. T to x 6 plus 5 11, ये 4 है, no changes. T to y 6 plus 8 14, no changes. T to z, so T to z में कुछ चेंज होगा क्या? It is 6 and it is -4, that is 2, no change. X to t it will be, so it will be ये है हमारे पास 4 और ये है -2, तो ये हो जाएगा 2, तो इट विल बी चेंज. ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ. xt2 में ये चेंज हो गया. नाउ y और x, ये है 7 - 3 4, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. yz इज दिस वन, तो 7 9 14, कोई चेंज नहीं होगा. z एंड x 2 plus 7 9, कोई चेंज नहीं होगा. z 2 plus 2 4, नो चेंज. ठीक है, तो आफ्टर सेकेंड इटरेशन यू कैन सी ये तो 0 ही है. t का 2 हो गया, y का 7 है, x का 4 है, z का 2 है. ठीक है, तो ये चेंज मतलब चेंज हुआ है. इट मीन्स वी नीड टू चेक नेक्स्ट टाइम. स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहीं से स्टार्ट करते हैं. T2x ये है 2 plus 5 7, यहाँ पर है 4, कोई चेंज नहीं करेंगे. T2y 2 plus 7 9, वो 8 है, कोई चेंज नहीं करेंगे. T2z देखो ये 2 है, ये -4, ये हो जाएगा यहाँ पे -2. ठीक है, इट विल बी T2z. X to t xt, where is xt? X to t, ओके, तो 4 -2 2, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो सही है. y to x 7 - 3 4, इसमें कोई चेंज नहीं है. y to z 7 plus 9, that is 14, और ये -2, कोई चेंज नहीं है. zx इट विल बी -2 2 0, तो ये 0 पहले से ही है. z, अच्छा सॉरी, zx था ये. zx इट इज -2 7, that is 5, ये पहले से 4 है. zs -2 2, इट विल बी 0, वो 0 है, कोई चेंज नहीं है. और st इट इज 0 plus 6, ये 2 है, कोई चेंज नहीं है. sy 0 plus 7 7, कोई चेंज नहीं है. तो ये था हमारा 0 2 7 4, और z का हो गया हमारे पास यहाँ पे -2, यहाँ पे चेंज हुआ है, इट इज -2. ठीक है, तो पहले ये +2 था, अब ये क्या हो गया -2. नाउ जस्ट वी सिंपली डू दिस ऑपरेशन वन मोर टाइम, चेक करते हैं कि दोबारा इसमें कोई चेंज हो रहा है क्या. ठीक है, तो h to t इट विल बी 0 plus 6, दैट इज, तो ये यहाँ चेंज नहीं होगा. एक मिनट में इरेज कर दूँ, सॉरी. t to x देख लेते हैं पहले. t to x 2 plus 5 7, no change. t to y 2 plus 8 10, no change. t to z 2 minus 4 -2 है, no change. x to t x, और ये हो गया हमारे पास t, तो 4 -2 2, no change. y x it is y and it is x 7 - 3 4, no change. y z 7 9 16, no change. z x z is -2 x is, it is 5, no change. z dash -2 2 0, no change. st 0 plus 6 6 2, no change. or sy 0 plus 7 7, no change. So you can see here, after this iteration the value, there is no change in the value, means there is no need for the relaxation. So these are the final shortest path for from the source vertex to the these all the vertices for this particular graph. तो अब अगर इसको हम सॉल्व करते यूजिंग द
डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम तो हमको एक बार में शॉर्टेस्ट पाथ नहीं मिलता, क्योंकि वो एक बार ही रिलैक्स करता है सारी एजेस को, और ये क्या कर रहा है, ये मॉड ऑफ वी मैनेज वन टाइम रिलैक्स कर रहा है। तो सेकेंड इटरेशन के बाद इसमें यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, वही सारा एज वेट्स है। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर, दीज आर द फाइनल एज वेट्स फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ठीक है, तो हमने इसमें एक चीज स्किप की थी कि द प्रेडिसेसर ऑफ ईच वर्टेक्स, सो एवरी टाइम व्हेन एवर वी आर जस्ट डूइंग द रिलैक्सिंग ऑपरेशन और रिलैक्सेशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रेडिसेसर को चेंज करते जाएंगे, जिससे दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ और प्रिंटिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। अब इट मे बी पॉसिबल, लाइक ऐसा हो सकता है कि थर्ड इटरेशन के बाद भी चेंज हो, फोर्थ इटरेशन के बाद भी चेंज हो, फोर्थ इटरेशन के बाद भी चेंज हो। अगर फोर्थ इटरेशन के बाद भी चेंज होता है, इट मीन्स साइकिल पॉसिबल है, सो विल गो फॉर जस्ट वन मोर टाइम। और अगर उस बार में भी चेंज होता है, इसका मतलब द पर्टिकुलर ग्राफ इज हैविंग अ साइकिल एंड वी कैन नॉट फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, एनी डाउट इन दिस एग्जांपल टू एनीबॉडी, देन प्लीज आस्क। No, sir. ओके, सो नाउ डिटेक्टिंग द नेगेटिव साइकिल्स, तो ये मैं एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ इसको। इट कैन बी, सपोज वी आर हैविंग ये जो कोड है, इट इज फॉर डिटेक्टिंग साइकिल, इट विल कम इन द एल्गोरिथम, मैं क्लियर कर दूंगा वहाँ क्या है। सपोज वी आर हैविंग दिस सिनेरियो एंड आप इन द फर्स्ट पास क्या होगा, वी विल सिंपली रिलैक्स दिस वन, तो इसका एज वेट हो जाएगा 2, और ठीक है, ये रिलैक्स हो गया, इसको रिलैक्स करेंगे ये हो जाएगा 5। ठीक है, और इसको रिलैक्स करेंगे, ये हो जाएगा -8। तो इट विल बी द सिनेरियो इन द फर्स्ट इटरेशन। पहले तो -3 होगा ना? सॉरी -3, हाँ, इट विल बी माइनस। तो फर्स्ट पास के बाद क्या होगा, दिस विल बी द सिनेरियो। अब हम क्या करेंगे, अच्छा जैसे क्या है, वी आर हैविंग 3 नंबर ऑफ वर्टिसेज हियर, तो टोटल 2 टाइम्स वी सिंपली रिलैक्स दिस। ठीक है, तो 2 टाइम इटरेशन होगा, वी सिंपली रिलैक्स ऑल द एजेस। सो दिस इज द सिनेरियो आफ्टर द फर्स्ट पास। लेट्स रिपीट दिस प्रोसेस फॉर द सेकंड पास अगेन। सो ये हो जाएगा -3 + 2 दैट इज -1, -1 + 3 दैट विल बी 2, 2 - 8 दैट विल बी -6। तो सेकेंड इटरेशन में एक बार चेंज हुआ है, इसका मतलब। अब एक बार और हम चेक करेंगे कि अगर ऐसा है तो बेसिकली क्या है, ये एक पूरा साइकिल ही है और ये बार बार चेंज होता रहेगा और ये इन्फिनिटी लूप में आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस -8 वैल्यू। ठीक है, तो टोटल जो कॉस्ट है ना इसका, दैट इज बेसिकली माइनस, लाइक इट इज 2, इट इज 3, 5, ये -8। जब इसको रिलैक्सेशन करते जाएंगे तो ये नेगेटिव साइकिल फॉर्म में इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा, तो हमको शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा नहीं, मीन्स वी विल स्टक इन द मिडल समवेयर। So after this, there is no one more time we also relax this one. So अब दोबारा करें तो ऐसा ये हो गया था, ठीक है। तो -6 + 2 it will be, उसके बाद भी हो रहा है क्या, -6 + 2 it will be -4, -4 + 3 it will be that will be -1, और -1 -8 -9। तो देखो ये रिपीटेशन हो रहा है, और ये टोटल सबका डिस्टेंस नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव साइकिल, तो दिस इज द नेगेटिव साइकिल। So in the algorithm, basically after performing the operation mod of v -1 time, we'll just check at the last time only। तो अगर लास्ट टाइम में किसी भी एज को रिलैक्स करते टाइम चेंजेस होते हैं, देन वी सिंपली रिटर्न false, means there is no shortest path possible। ठीक है, otherwise we simply return true। So in this way we can simply utilize this Bellman-Ford algorithm for finding the shortest path। ठीक है, now let's come move to the algorithm। so देखो ये तो initialization वाला part था, so we are just initializing for every vertex, so it will cost around cost around theta of v time। we are just executing this for if1 to mod of v -1, और यहाँ पे हर एक एज को रिलैक्स कर रहे हैं, तो टोटल जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी वो होगी इसकी O of v टाइम, ये O of e टाइम, टोटल हो जाएगा O of ve टाइम। ठीक है, एंड हियर वी आर जस्ट चेकिंग फॉर
one more time, that is for O of E time. ठीक है, मीन्स हर एक एज को एक बार और रिलैक्स करेंगे यहाँ पे. तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, इट इज बेसिकली O of V plus VE plus E, that is O of VE time. And if we are talking about the complexity for Dijkstra algorithm, so in the case of Dijkstra algorithm, that was O of क्या था उसमें, E log V. E log V, yes, E log V. ठीक है, so that was E log V, so I think that was less as compared to this Bellman-Ford, because यहाँ relaxation mod of V minus वन टाइम में वहाँ सिंगल टाइम हो रहा था, बट वो नेगेटिव एज वेट साइकिल के लिए वर्क नहीं कर रही थी, क्योंकि उसमें रिलैक्सेशन एक बार था. तो इट मे बी पॉसिबल कि उसमें अगर नेगेटिव वेट्स हैं तो वन सिंगल टाइम एग्जीक्यूशन में हमको उसमें सॉल्यूशन नहीं मिले. ठीक है, so that's why this algorithm, Bellman-Ford algorithm, can be utilized for finding the shortest path in the negative weight edges, and it is having several applications also, like a version of Bellman-Ford is used in the distance vector routing protocol. So it is a topic in the computer networking or the computer network. So this protocol decides how to route packets of data on a network. The distance equations is the number of routers, to decide weights in the network. So is the number of router, a certain path must go through reach its destination. So it can be utilized there. It can be utilized in the internet also, like many protocols. एक हमारे पास है routing information protocol, that is RIP. So that RIP utilizes this Bellman-Ford algorithm. एक और प्रोटोकॉल हमारे पास है, that is IGP, that is इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल. तो वो भी Bellman-Ford algorithm को यूटिलाइज करता है. ठीक है, so these are some of the real life examples for this Bellman-Ford algorithm. So basic, I think the basic difference is clear why, how this Bellman-Ford algorithm will work for the negative age weight rather than the Dijkstra algorithm.